Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, welcome back to the another video. आज की इस वीडियो में हमने स्मार्ट सीरीज के MCQs नंबर 151 से लेके MCQs नंबर 160 तक आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी। ओके, so now let's move toward the MCQs, that is 151, and that is the FUT. The FAT is beneficial due to low noise, small size, high power gain, all of the above. So yes, in this case, option D will be your correct answer. For low noise, we will use FAT as I already discussed in my last lecture. उसमें मैंने FAT और जो MOSFET हैं उसके डिफरेंस मैंने डिस्कस किए थे, and over there I also discussed this point that FAT is used for low noise application, and for high noise application you will use the MOSFET. Okay, so साइज भी इसका स्मॉल होता है, हाई पावर गेन, यस इसका पावर गेन हाई होता है, इसका करंट गेन जो होता है वो मीडियम होता है, और इसका जो इनपुट आउटपुट में फेज डिफरेंस होता है दैट इज 180 डिग्री. ओके, so you should remember all these points. Okay, in this case option D will be your correct answer. Okay, next MCQs number 152, that is VCE. Voltage means voltage between collector and emitter of a transistor is very important in checking whether the transistor is working in saturation, working in cutoff, defecto, all of the above. Acha, yeah, VCE, which is the voltage between collector and emitter. So if that voltage is less than VCE saturated voltage, हमारे पास VCE एक सैचुरेटेड वोल्टेज होते हैं. ओके, ये आपको डेटा शीट के ऑन कैरेक्टरिस्टिक में आपको ये गिवन होगा. जो ट्रांजिस्टर का ऑन कैरेक्टरिस्टिक है वहां पे आप देख लो तो ये VCE सैचुरेटेड वैल्यू आपको गिवन होगा, जो कि नॉर्मली हमारे पास लाइक प्रैक्टिकली हमारे पास ये 0.2 से लेके 0.3 तक वोल्ट इतना होगा. वहां पे आप चेक कर लो तो वहां पे आपको स्पेसिफिक वैल्यू फॉर दैट स्पेसिफिक ट्रांजिस्टर वहां पे आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी. बट प्रैक्टिकली ये हमारे पास होते हैं 0.2 टू 0.3 तक इतना का वो हमारे पास होता है, और आइडियली ये हमारे पास जीरो होता है. ओके, आइडियली इट विल बी इक्वल टू 0 वोल्ट. ओके, अच्छा, इफ योर VCE, which is the voltage between collector and emitter, is less than VCE saturated, okay, तो फिर आपके ये क्या होगा, ये आपका सेचुरेशन स्टेट में होगा. सेचुरेशन स्टेट में इट मीन्स कि आपका जो कलेक्टर करंट होगा दैट विल बी मैक्सिमम, वो हाई होगा. ओके, अच्छा, for cutoff region your ICE value will be equal to 0. So it means that if ICE value is equal to 0, it means that there will be no loss in collector resistor. Okay, so it means that जो हमारे पास VRC होगा, which is the voltage across RC, that will go to 0. ओके, तो वहां पे हमारे पास लॉसेस नहीं होंगे, तो उसकी वजह से आपका जो VCC होगा that will be equal to VCE. So when VCE is equal to VCC, then it will be your saturation in cutoff region. Okay, so cutoff region को भी हम VCE से देखते हैं, और VCE हमें saturation state के बारे में भी बताता है. VCE हमें डिफेक्टिव के बारे में बताते हैं कि आपका ट्रांजिस्टर डिफेक्टिव है कि नहीं. या तो अगर VCE वैल्यू काफ़ी लार्ज वैल्यू होगा तो फिर इट मीन्स कि आपका VCE जो ट्रांजिस्टर है वो डिफेक्टिव है. या अगर VCE की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ जाए तो इट मीन्स कि आपका ट्रांजिस्टर डिफेक्टिव है. या VCE की वैल्यू अगर आपके पास 0 आ जाए तो इट मीन्स कि ये ट्रांजिस्टर आपका डिफेक्टिव है. सो या दिस कैरेक्टरिस्टिक इज आल्सो डिसाइडेड बाय VCE voltage. So in this case option D will be your correct answer. Okay, next MCQ number 153, that is FIR filter can be designed to achieve linear phase, inverting phase, non-inverting phase, both A and B. So in this case, first of all, you will need to understand that what is meant by FIR filter. It means that finite impulse response. Okay,
अच्छा, ये फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स FIR फिल्टर जो है ये इट इज सिंपल फिल्टर आउट ऑफ ऑल फिल्टर्स, दिस इज सिंपल फिल्टर होता है एंड दिस फिल्टर विल ऑलवेज बी स्टेबल फिल्टर होते हैं, ओके। एंड दिस फिल्टर इज हैविंग ए लीनियर फेज रिस्पॉन्स, ओके। इसका लीनियर फेज रिस्पॉन्स होता है। और एक और कैरेक्टर इसमें ये है कि दिस इज नॉन काजियल फिल्टर, ओके। यू होपफुली यू नो व्हाट यू मीन बाय काजियल एंड नॉन काजियल। नॉन काजियल मीन्स कि इसका जो रिस्पॉन्स होता है दैट्स डिपेंड ऑन द फ्यूचर वैल्यू विच इज प्रैक्टिकली नॉट रियलाइजेबल, ओके, जिसको हम रियलाइज नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। दिस इज नॉन काजियल, ओके। लाइक इसका जो आउटपुट वैल्यू होगा दैट्स डिपेंड ऑन द फ्यूचर इनपुट, ओके। लाइक जो आपके पास अभी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है दैट्स डिपेंड ऑन द फ्यूचर इनपुट, ओके। सो जितने भी हमारे पास आइडियल फिल्टर्स होते हैं वो हमारे पास नॉन काजियल फिल्टर हैं, ओके। So FIR filters can be designed to achieve linear phase, inverting phase, non-inverting phase, both A and B. So इसमें हमारे पास linear phase option A will be your correct answer. अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मुझसे रह गया था, FET फिल्टर में हमारे पास हाई पावर गेन को मैंने डिस्कस नहीं। इसमें एक पॉइंट ये है कि हमारे पास जो FET का इनपुट इम्पिडेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो हाई होते हैं, ओके। जिसकी वजह से ये करंट ड्रॉन जो करते हैं इनपुट पे हमारे पास जो करंट इन होते हैं वो कम होते हैं बिकॉज ऑफ इट हाई इनपुट इम्पिडेंस, okay. That's why it will not load down the power, okay. आउटपुट इस FET के अकॉर्डिंग अगर हम BGT को देखते हो तो BGT के जो आउटपुट इम्पिडेंस है वो हाई होते हैं, ओके। Number 154 in 8051 the contents of the instruction register are split into 2 nibble, 3 nibble, 4 nibble, 5 nibble. You should remember this nibble, 1 nibble is equal to 4 bits होते हैं, okay. So it means that 2 nibbles कितने हो गए, वो 8 bits हो गए, okay. तो हमारे पास 8051 में जितने भी रजिस्टर्स हैं लाइक एक्यूमुलेटर हो गया, आपका B रजिस्टर हो गया, R0 हो गया, R1, R2 हो गया, R3 हो गया, R4, R5, R6, R7 हो गया, DPTR हो गया, इट मीन्स के डेटा पॉइंटर हो गया, PC हो गया, इट मीन्स के प्रोग्राम काउंटर सो जितने भी ये सारे रजिस्टर्स हैं ये हमारे पास 8 बिट्स होते हैं, ओके। 8051 में यू शुड रिमेंबर दिस, लाइक दैट्स इक्वल टू 2 निबल। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Next MCQ is MCQ number 155. That is, one of the properties of FIR filter is that dash is not required for FIR filter. Input, transfer function, feedback, output. Feedback is not required for the FIR filter. Okay. Achha, one property of FIR filter is that this filter is a non-recursive filter. Okay. It means that this filter is computed by using the present and the past value of the input. इस फिल्टर में हम जो हमारे पास आउटपुट वैल्यू होगी लाइक पास्ट वैल्यू ऑफ द आउटपुट वैल्यू हम कंसिडर नहीं करते, जो कि हमारे पास आएगी इफ देयर इज अ फीडबैक पाथ, ओके। अगर फीडबैक पाथ होगा तो उससे हमारे पास इनपुट पे आउटपुट वैल्यू आएगी। सो दिस फिल्टर विल नॉट बी कंप्यूटेड इफ यू ब्रिंग द आउटपुट वैल्यू टू द इनपुट, ओके। दिस फिल्टर विल ओनली बी कंप्यूटेड इफ यू ब्रिंग द past or present value at the input side, not the output value to the present side, okay. So this is the characteristic case में हमारे पास feedback path नहीं होता। Okay, MCQ number 56, 156. That is optical power cable depend on dash associated with optical fiber receiver. अच्छा, ऑप्टिकल पावर केबल जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी हो रहे हैं और प्रैक्टिकल भी ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, लाइक PTCL हो गया इंटरनेट, उसमें कोएक्सियल केबल को ये रिप्लेस कर रहे हैं ऑप्टिकल पावर केबल में, क्योंकि इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं हमारे पास। इसमें हम ट्रांसमिशन करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं बाय यूजिंग लाइट, ओके, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम इसमें पावर लाइट के थ्रू जो पावर होता है उसको हम डेटा जो होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। इसका डेटा रेट काफ़ी ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड ऑफ द लाइट। और दूसरी बात यह है कि लाइट की जो हमारे पास होते हैं उसमें हमारे पास वो हमने पढ़े हैं कि हमारे पास उसमें क्वांटम ऑफ एनर्जीज होते हैं, ओके। तो एनर्जी को हम HF से फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू HF, और क्वांटम ऑफ लाइक पैकेट्स ऑफ एनर्जीज होते हैं, ओके, जो कि सीरीज में फ्लो होते हैं और पावर को ट्रांसफर करते हैं। तो क्वांटम एनर्जी या दिस इज आल्सो एसोसिएटेड विद द ऑप्टिकल फाइबर रिसीवर पे, या डार्क करंट लाइक लॉसेस जो होते हैं हमारे पास, डार्क करंट हमारे पास हीट प्रोड्यूस करते हैं, ओके, जो कि बहुत कम होते हैं ऑप्टिकल पावर केबल में। So that's two thingy also associated with the optical fiber receiver. So in this case, option D will be your correct answer.
इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल में हम थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू हम इसमें लाइट को ट्रांसफर करते हैं। ओके, और वो लाइट जो है वो अपने साथ पैकेट्स ऑफ एनर्जी को कैरी ऑन करते हैं। अच्छा, इसका और भी काफ़ी और भी बहुत सारे फायदे। इसका डेटा रेट जो है वो काफ़ी हाई है ऑप्टिकल फाइबर केबल का एज कम्पेयर टू द कोएक्सियल केबल। और दूसरी बात है कि ये इस कोरोसिव नहीं है। ओके, क्योंकि इसमें ग्लास यूज़ होता है, तो ग्लास कोरोसिव नहीं होता। ओके, जबकि कोएक्सियल केबल अक्सर वो कुछ टाइम बाद वो कोरोसिव हो जाते हैं और खुद ही लाइक वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं केबल्स, तो बिकॉज ऑफ द कोरोजन। सो वो नेगेटिव पॉइंट्स वो कौन सी यहाँ पे नहीं है। ओके, वन optical fiber cable. Okay, next MCQ number 157, that is the parameter HFE of a transistor correspond to beta DC, beta AC, RE dash, RC dash. अच्छा, ये हमारे पास parameter HFE. This is actually the current gain or amplifier factor, or you can say that this is exactly same as the beta. Okay, ट्रांजिस्टर में हम बीटा यूज करते हैं तो उसकी तरह बिल्कुल हैं। ओके, so in this case beta DC, beta, okay, in this case beta AC, this will be your correct answer. Okay, MCQ number 158, that is oscillator whose frequency can be changed by a DC control voltage is transistor wave oscillator, wave bridge, Wien bridge oscillator, crystal oscillator, voltage control oscillator. By using voltage control oscillator you can vary the frequency, okay, of that of the oscillator. Okay, हम कितना फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते? We vary the frequency from few hertz to several hundred megahertz. Okay, इतना ज़्यादा वो फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन हम इसमें कर सकते हैं बाय यूजिंग वोल्टेज। ओके, वोल्टेज के थ्रू हम फ्रीक्वेंसी को इसमें चेंज करते हैं। MCQ number 159, that is the DC operating point of an amplifier specified by voltage and current value is called gain. Q point load line no, तो ऑपरेटिंग पॉइंट दैट इज वोल्टेज एंड करंट, तो दैट इज योर Q पॉइंट। ओके, Q पॉइंट आपको वो स्पेसिफिक वोल्टेज भी देते हैं और स्पेसिफिक करंट भी देते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट पे। ओके, सो इन दिस केस ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Last MCQ of this class is that is 160. In RLC circuit at low frequency Z is larger due to low frequency means कि आपका XL जो होगा that should be low और आपका XC जो होगा that should be high. Okay, because XC is equal to 1 divided by omega C. Omega is 2 pi f, तो frequency कम होगा तो XC आपका ज़्यादा होगा। तो XC is larger, yes, XC is larger. XL is smaller, no, this is larger. ये correct answer नहीं, XC is smaller, not possible. So option A will be your correct answer. Okay, so this is the end of this video. If you have any confusion in any MCQs, then please put that MCQs in the comment section. Thanks for watching. Allah Hafiz.